Guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about sociology theory and concept. So इस पेपर को करने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर दिस पेपर, और लास्ट आप प्रिपरेशन में क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हम लास्ट आर फाइनली तैयार करें, वी कैन क्रैक द पेपर इजीली. सो कम विद द बेसिक टर्म्स. आपने कहा सर इसकी ना आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाई, वी डोंट हैव अ प्लेलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियोस और पेपर. तो यार इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी विद इन वीक टाइम, मैक्स टू मैक्स. आपके वजह से पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं. हाँ, थोड़ी बटी हुई है इसलिए आपको नहीं मिल पाती. कम अप टू द मेजर क्वेश्चन दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. आपने कहा सर क्वेश्चंस, यस यू कैन लुक एट द क्वेश्चन हियर. ये सारे के सारे अपलोड हो जाएगा मेरे इंस्टा आईडी पे विद द आंसर एंड ऑल दैट. यू कैन गेट द नोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सारी चीजें क्लियर करनी, नोट्स फ्री नहीं होता, उनके लिए पे करना पड़ता है. तो यहां बात आती है पहले कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. यस कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, एंड हाउ वी कैन बी श्योर कि सर ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएंगे. तो उसके लिए क्या करना, प्लीज वीडियोस में जाना, बच्चों के रिव्यूज पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा. एंड देन स्टार्ट अप द क्लास. टाइम टू स्टार्ट द क्लास. If you not subscribe the channel till now, guys, do subscribe it. Here are the certain questions. आपने कहा सर कुछ क्वेश्चन, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जस्ट हटिए, इन क्वेश्चन को कर लो. देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, आई प्रॉमिस. द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज आर इंट्रिंसिकली इंटरवाइंड. सो नॉट इंटरेस्टिंगली, इट इज instincts. I repeat, instinct socially. Yeah, I repeat, concept and theories are instinct socially intertwined. Comment. How I'm going to comment on the basically concept and theories, how they have been intersocially connected or intertwined. Next one, how did Enlightenment influence the sociological thoughts of Weber and Durkheim? वेबर और डार्किंग की थ्योरी को क्लियर करके जाना. मैंने पहले अपने वीडियोस में बोला था कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऑन टिप होने चाहिए. गाइस मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द थ्योरीज, उन पे काम करेंगे एंड देन नो ईच एंड एवरी फैक्टर. कम ऑन थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस डार्किंग्स अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज अ साइंस. या ही टोल्ड यू, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को स्टडी किया तो यू गेट टू नो दैट कि उसके कॉन्सेप्ट में साइंस को हाईलाइट करता हूं. नेक्स्ट, What is the concept? Explain the process of theory formation. Concept क्या है और theory formation को कैसे क्लियर करें कॉन्सेप्ट में. मतलब what is the concept, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, theory formation क्या है, उसका प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, explain Parsons action theory. Yes, we have the action theory now. So it's not Weber, it's not Durkheim, it's Parsons, the action theory. Comment. Next one, what is paradigm shift? ये बीएड के स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं मैंने, तो आई रियली वांट यू गाइस टू गो एट दैट वीडियो. ये सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं जो मैंने क्वेश्चन बोले, सारी वीडियोस हैं. यू कैन सर्च इट इजीली इन बीएड एंड एमएड सेशन. आई रिपीट, कह रहा व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट, डिस्कस द सुटेबल एग्जांपल. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द सोशल कॉन्सेप्ट. ये सोशल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हाउ दे आर बीन रिलेटेड टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी, और ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी से कैसे कनेक्ट करते हैं. पहले हमें क्लियर करना सोशल कॉन्सेप्ट, देन वी विल नीड टू कनेक्ट देम विद सोशियोलॉजिकल थ्योरी. कम ऑन नेक्स्ट वन, हाउ इज, आई रिपीट, हाउ इज रेडक्लिफ ब्राउन्स अप्रोच टू स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लेवी-स्ट्रास. डिफरेंस बिटवीन लेवी-स्ट्रास एंड रेडक्लिफ, इन दोनों की थ्योरीज में डिफरेंस करना है. नेक्स्ट वन, क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू फंक्शनलिस्ट थ्योरीज. Action theory आ गई, न्यू फंक्शनलिस्ट थ्योरी आ गई. थ्योरीज हैव अ डोमिनेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर पेपर, यू कैन नॉट अवॉइड देम, तो आपको करनी है. जंप अप नेक्स्ट पार्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पॉजिटिविज्म एंड फंक्शनलिज्म एज अ टू थ्योरेटिकल अप्रोचेस. आई रिपीट, द पॉजिटिविज्म एंड फंक्शनलिज्म, ये भी डिफरेंस आ गया. नेक्स्ट, इज सोसाइटी एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. I repeat the question, can I, is society an objective reality? Discuss. Now while giving the answer to this question, you guys better to make a chart and then differentiate the basic points, वो बहुत easy रहेगा define करने के लिए. Come on, next one, explain the relation between language and social reality. I repeat, कहता है explain the relation between language and social reality. And the next we are having
डिस्क्राइब द मेजर प्रेमिसेस ऑफ फंक्शनलिज्म, आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे जब आपने डिफरेंशिएट किया था फंक्शनलिज्म और पॉजिटिविज्म में, वहां आपने तैयार किया था क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, डिफाइन एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइट एंड स्पेशल प्रेफरेंस टू पैरेटो. सो व्हाट इज मीन अ पैरेटो एंड हाउ इट बीन वर्क विद एलाइट, मतलब एलाइट के साथ काम कैसे करता है, उन कॉन्सेप्ट को पूरा डिफाइन करना आपने. क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, उसको थोड़ा डिफाइन करना है विद द मार्क्सिज्म अप्रोच जब आगे आएगा. हाउ डिड एमर्ज इज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैसे काम करता है. नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय पावर, ये 100% पेपर में होगा क्वेश्चन गाइस. एग्जामिन इट्स रिलेशन विद अथॉरिटी एंड डोमिनेशन, पावर क्या है और डोमिनेशन अथॉरिटी से इसकी रिलेशन को पूरा एग्जामिन करना है. नेक्स्ट, एलिमिनेशन, आई रिपीट, एलिमिनेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ dehumanization of labor. I repeat, this is a good question. कहता है elimination is a product of dehumanization of labor. Discuss in detail. Next, define the concept of elimination and discuss mass outstanding or understanding of the elimination in capitalist society. This is the reason I mentioned about the mass over there. Jump to next one. Discuss Weber's concept of power and authority. वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, 4 लोग आए अभी तक, अगर 4 को ध्यान से पढ़ा तो आपने, ये पेपर में कंफर्म आएंगे कहीं ना कहीं. नेक्स्ट, डिस्कस सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर डेवलपमेंट. आई रिपीट, डिस्कस द सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर डेवलपमेंट. एंड द नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट. In the context of modern states, sovereignty denotes the exercise of legal political authority. I'm repeating the question. In context of modern states, sovereignty denotes the exercise of legal, I repeat, and political authority. तो ये हमें पूरा डिटेल में डिफाइन करना है and we need to mention the points too. Jump up to the next part here. Distinguish between legal and political sovereignty with suitable example. Legal and political दोनों को डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना है इन पॉइंट्स. Critically analyze the person's contribution to understanding social system. से पार्सन दोबारा आ गया, वेबर भी आ गया, डार्कमैन भी 2 बार आ चुका है, तो हमें इनको क्लियर कर लेना है, इनके नाम लिख लेना अलग से क्योंकि कंफर्म पेपर में होंगे. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. सर सिटीजनशिप को अच्छे से कर लेना है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है. आई एम रिपीटिंग, कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. कम नेक्स्ट वन. Does civil society promote democracy? I repeat, does civil society promotes democracy? Discuss. इसमें अपना व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं. Again, citizenship come. What is the relation between the state and citizenship? The relationship between state and citizenship. ये दोनों के दोनों डिफाइन करने होंगे आपको. Jump to the next part. Compare and contrast. Compare and contrast the instrumentalist. I repeat, compare and contrast the instrumentalist and constructive views on authenticity. दोनों के दोनों बताने आपने. You guys need to mention this. Can I compare and contrast the instrumentalist and constructive views of authenticity? Jump up next one. Critically examine the functional perspectives on social stratification. So what is stratification? ये short note में भी आ सकता है. ये स्टार्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होना चाहिए. इट मे कम इन योर शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गुड वन. डिस्कस एरिक्सन्स कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन. एरिक्सन, इसकी ऑलमोस्ट 5 से 7 वीडियोस बनी हुई है मेरी चैनल मिल जाएंगे आपको. आई होप चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया और अभी तक एक्सेस कर सकते हो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप चल के. नेक्स्ट, discuss interface between caste and class with suitable example. So what is an interface? How to work on this? Discuss the interface between caste and class with a suitable example. Next, describe Frederick Barth. Describe Frederick Barth's understanding of ethnic group and boundaries. What is an ethnic group? Now there is a question that what is an ethnic group? Can an ethnic group can come in a paper? Yeah, it can come. Next one. Describe Mitchell Young's thesis. I repeat, describe Mitchell Young's thesis on rise of
meritocracy. I repeat, the rise of meritocracy and discuss its nature. Jump on next one. How does Darendorf differ from Marx? How does Darendorf differ from Marx in analysis of the class and class conflicts in industrial society? Again a class conflict. Short notes में आ सकता है. Next, is civil society a threat to functioning of democracy? Yeah, it's a question that must be formed in सही पेपर में होगा 100%. कह रहा है, is civil society a threat to functioning of democracy? Comment. Next, critically examine the major sociological approach to study the ethnicity. Again, ethnicity. Sir, ये short note में आ सकता है. Jump up to the last question. Right, short note of the following. Modernization. We know the answer. Rationality. What is rationality? How it works. And the last, structuralism. तो ये हैं वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. तो गाइस मेक श्योर दैट यू गाइस हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस. अगर कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ इंस्टा आईडी मैंने डाल दी थी, इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. टिल देन ऑल द बेस्ट गाइस.